New Oxford Modern English Book, Class 5th, Poem 1, Cargoes, written by John Masefield. Question answers with complete explanation in Hindi. Channel, word meaning channel. The channel of water between Britain and France is called the English Channel by the Britisher and La Manche, the sleeve by फ्रेंच. चैनल एक ब्रिटेन और फ्रांस के बीच की एक वाटर की नहर जैसी एरिया है जिसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं ब्रिटिशर्स और लॉ मेंच जो बोलते हैं वो फ्रेंच. कोस्टर, अ शैलो हल्ड शिप दैट यूजुअली गोज फ्रॉम पार्ट टू पार्ट, पोर्ट टू पोर्ट ऑन द सेम आइलैंड और कॉन्टिनेंट कैरिंग द कार्गो. एक काफ़ी हल्ड शिप होती है जो कि एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक जाती है उसी आइलैंड में और सामान को लेके जाती है, अपने साथ कार्गोस को लेके जाती है. गैलियन, अ लार्ज सेलिंग वेसल विथ 3 or 4 मास्ट used from around 1400 to around 1600 to carry cargo and to wage war. ये भी एक शिप का नाम है. एक बहुत बड़ी सेलिंग वेसल है जो उस पर 3 या 4 ऐसे बड़े बड़े जो कपड़े के पाल जैसे लगे रहते हैं जिसको मास्ट बोलते हैं. ये ईयर 1400 से 1600 में कार्गोज यानी सामान को कैरी करने के लिए यूज़ में होता था और लड़ाइयों के लिए भी यूज़ में आया करता था. Isthmus, a strip of land with water on both sides that connects two large land masses such as the Isthmus of Panama that connect South America to North America. एक स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है, दोनों बाजू पानी रहे और एक छोटी सी बीच में लैंड रहे जो दो बड़े बड़े लैंड मासेस को आपस में कनेक्ट करे. ऐसी ही इस एक इस्थमस का नाम है इस्थमस ऑफ पनामा जो साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट करती है. माइडोर्स, दैट इज गोल्ड क्वाइंस. निनेव, कैपिटल सिटी ऑफ द एंशिएंट एम्पायर ऑफ आस्ट्रिया, मॉडर्न डे इराक. ये कैपिटल सिटी का नाम है. ओफिर, फेबल्ड लैंड ऑफ गोल्ड. पिगलीड, ओब्लॉन्ग ब्लॉक्स ऑफ क्रूड लेड यानी जो क्रूड जिसको साफ करना है ऐसे लेड का बहुत बड़ा ब्लॉक दैट हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर इन अ फर्नेस. क्विनक्वारिम, a large ship used by Greeks and Romans in ancient times to carry cargo and to wage war. क्विनक्वारिम भी एक शिप का नाम है जो रोमन्स यूज़ करते थे, ग्रीक्स यूज़ करते थे कार्गो को कैरी करने के लिए और लड़ाइयों के लिए. टाइन, अ रिवर इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड. कॉम्प्रिहेंशन, ड्रॉ आउट द टेबल बिलो एंड फिल इट इन द टाइप ऑफ शिप. व्हाट इज नेशनलिटी ऑफ द शिप? निनेव. फर्स्ट स्टेंजा टाइप ऑफ शिप है क्विनक्वारिम. सेकंड स्टेंजा में गैलियन शिप के बारे में बोला गया है और थर्ड स्टेंजा में कोस्टर शिप के बारे में बोला है. तो उसमें सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेशनलिटी ऑफ द शिप. शिप कौन कौन से देश को बिलोंग करती थी या व्हाट इज़ द नेशनल. निनेव जो है स्पेन और इंग्लैंड. जो क्विनक्वारिम के नीचे लिखा है वो क्विनक्वारिम के बारे में, गैलियन के नीचे गैलियन और कोस्टर का कोस्टर. वेयर हैज़ इट बीन टू एंड वेयर इज़ इट गोइंग. ये कहाँ जा रही थी? निनेव से पैलेस्टीन. स्पेन से स्पेन में सामान कैरी कर रही थी और इंग्लैंड से इंग्लैंड. व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज इट मेक? रोइंग, रो हो रही थी. डिपिंग, सेकंड जो शिप है वो डिपिंग एंड थर्ड जो शिप है दैट इज बटिंग. व्हाट इज इट्स कार्गोस. वो सामान कौन सा लेके जा रही थी? जो पहली शिप है निनेव, एवरी, एप्स, पीकॉक, सैंडलवुड, सैडरवुड, वाइन. जो सेकंड वाली शिप है दैट इज डायमंड, एमरल्ड, एमिथिस्ट, टोपाज, सिनेमन, गोल्ड एंड मॉइड्रोज. और जो थर्ड वाली शिप है दैट इज कोल, रोड, रेल्स, पिगलीड, फायरवुड
ironware, cheap tin trays. The poet, question number 2, the poet creates a positive impression of the ancient ships that are described in the first and second stanza. How? पोएट पॉजिटिव बोल रहे हैं पहले और सेकंड स्टेंजा में पुराने ज़माने की शिप्स के लिए. कैसे? द पोएट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इम्प्रेशन ऑफ द एंशियंट शिप्स with a kind of exotic and the precious cargoes the ship are carrying. जो वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके जा रहे थे उससे वो फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा में प्रेशियस उसको बता रहे हैं, एंशियंट जो टाइम है उसको अच्छा बता रहे हैं. द पोएट ऑल्सो यूजेस द अट्रैक्टिव साउंडिंग नेम्स ऑफ शिप्स. विच वर्ड इन द थर्ड स्टेंजा क्रिएट अ negative or dull impression? Answer. The poet uses the word like dirty, salt-caked, smoke, stacked to create a dull or negative impression. Who would be able to use or buy the cargoes from the 3 different ships? Think about whether the items are everyday goods or luxurious. Answer. The first 2 cargoes are exotic as well as luxurious. It is not meant for the poorer section, but it is for the richer section. पहले जो 2 कार्गोज हैं वो लग्जीरियस और अच्छी चीज़ें लेके जा रही थी जो गरीब लोगों के लिए न होके रिचर सेक्शन के बिलोंग करती थी. द थर्ड कार्गोज कैरी स्टाइन, कोल, रोड रेल, पिग लीड, फायरवुड, आयरनवेयर and cheap tin trays are meant for normal people. Next question. What powers each of the 3 ships? Discuss this question and try to find the evidences in the poem. Quinquerem is powered by oars, as this poem says, rowing home to heaven. Galleon is powered by sails, as the movement written is dipping. Coaster is motorade. The movement written is butting. Reference to context. A. Dirty British coasters with a salt-caked smokestack. Why would the ship's smokestack be covered in salt? Answer. The ship's smokestack is covered in salt. When the salty sea water lands on the smokestacks, it dries up and coats the smokestack. With salt wine, the water just evaporates. Write this line of poetry out as a sentence. Use these words to start. The British coaster was and. Answer. The British coaster was dirty and salt-caked. B. Dipping through the tropics by the palm green shores. What does the poet mean by tropics? By the tropics, the poet is referring to the Caribbean Sea. Second, the second line of each stanza begins with a verb ending with ing. What do we do when we dip something? Explain how this describes the movement of the ship. Dipping refers to the up and down motion of the ship. The poet tells us that how the ship rises and falls gently along with the waves. Summary of the poem Cargoes. The poem Cargoes is written by John Masefield. The first stanza describes a ship that was used in ancient times to carry exotic and expensive goods such as ivory, apes, peacocks, sandalwood, cedarwood, sweet wine, white wine. It refers to the riches of the King Solomon, which would be transported by a ship rowed by oarsmen. It talks about the happy time as the ship was rowing to sunny Palestine, which was a heaven, a safe place. The second stanza describes the Spanish galleon sailing across the Atlantic Ocean. These ships sailed with the help of the wind blowing into the sails.
This ship carried a cargo of diamonds, emerald, amethyst. The ship was dipping through the tropics by the palm green shores. The third stanza describes a ship of the 20th century, which was dirty, soot-coated. These ships motored their way through the bad March weather of the English Channel with the cargo of tin, coal, road rail, piglead, firewood, ironware, cheap tin trays. Annotation: Quincarim of Nineveh, from distance O fair, rowing home to heaven in sunny Palestine, with a cargo of ivory and apes and peacocks, sandalwood, cedarwood, and sweet white wine. First introduction. These lines are taken from the poem Cargoes, written by John Masefield. Central idea. In this poem, the poet talks about different types of ships, their movements, and their cargoes. Explanation. The first stanza describes a ship that was used in ancient times to carry exotic and expensive goods such as ivory, apes, peacocks, sandalwood, cedarwood, sweet white wine. It refers to the riches of the King Solomon, which would be transported by the ship rowed by the oarsmen. It talks about the happy time as the ship was rowing to sunny Palestine, which was a heaven, a safe place. Working with words. Think of the homophones with words with the same pronunciation but with the different spelling for the following words. Stories. Stories ये कहानी होता है, ये बिल्डिंग की स्टोरीज होता है. डियर. डियर एक डियर यानी हिरन, एक डियर यानी प्यारा. वुड. वुड एक वुड यानी लकड़ी और एक वुड जो हम वर्ब में यूज़ करते हैं. योर. सीन. सीन. सीन यानी देखना, सीन यानी ब्यूटीफुल सीन पिक्चर का जैसे. ये आई यानी मैं, ये आई यानी आँख. कैन यू राइट आउट द फुल फॉर्म्स ऑफ दीज एब्रीविएशंस? जैसे EG यानी एग्जाम्पल, KG यानी किलोग्राम, BC यानी बिफोर क्राइस्ट, M small r is Mr, MRS is mistress, AD means after death. See if you can match the following. IE means that is, VOL dot यानी volume, PTO means please turn over, UNO यानी United Nations Organization, DR means doctor, BA means Bachelor of Arts, YMCA means Young Men's Christian Association. Can you say what noises are made by the following? Donkeys bray, ducks quack, jackals howl, kittens mew, frogs croak, crows caw, nightingales sing, bulls bellow, bears growl, owls hoot, flies buzz, pigeons coo, turkeys gobble, snakes hiss. Learning about language conjunctions. Try to join the pairs of the sentence below. Use the words and, but, so, or because. He could not swim. He had a bad cold. He could not swim because he had a bad cold. She was not at home. We were not able to meet her. Answer: she was not at home, so we were not able to meet her. Mr. Patel went to market. He bought some eggs. Answer: Mr. Patel went to the market and he bought some eggs. She is very tall. Her sister is quite short. She is very tall, but her sister is quite short. Ashok did not have a pen. He could not sign the check. Ashok did not have a pen, so he could not sign the check. Alok could not read the book. He had lost his glasses. Answer: Alok could not read the book because he had lost his glasses.
Revka wrote the letters. She did not post it. Revka wrote the letters, but she did not post us. Ravi had a headache. He had done too much work. Ravi had a headache. Full stop की जगह आएगा because he had done too much work.